Assalamu alaikum. Today I'm going to present a topic, behaviorism. What is behaviorism? Behaviorism is actually a theory of learning based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning. ये हम पहले भी जैसे पढ़ चुके हैं, ये इसी बात पर है कि दो थियरीज बनती हैं, जो एक इसको जो अपोज करती है और एक जो ये खुद है। दैट इज एक कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो पैदाइश से पहले ही ऑटोमेटिकली सब सीख लेते हैं, बट बिहेवियरिज्म इज समथिंग जो कि ये बताता है, इट इज अ थियरी जो ये बताती है कि बच्चे पैदाइशी तौर पर कुछ लेकर नहीं आते हैं। वो जब पैदा होते हैं अपनी एनवायरनमेंट से जो देखते हैं, जो लेते हैं, वो ही उनके अंदर डेवलप हो जाता है। Conditioning occurs through interaction with the environment. That's what I said. Behaviorists believe that our responses to environmental stimuli shape our actions. मतलब अगर एक बच्चा देख रहा है कि कोई किस तरह बोलता है या उसका क्या लहजा है, तो वो उसी को एक्वायर करता है, उसी तरह से बोलता है। अगर एक बच्चा पंजाबी सुन रहा है, अपने बड़ों को उसमें इंटरेक्शन करते हुए देख रहा है, तो वो उसी तरह से करेगा। और ये सिर्फ लैंग्वेज एक्वायर करने में नहीं करेगा, वो अपना लहजा भी वैसा कर लेगा और अपना तरीका, मतलब उसका जो अंदाज होगा दूसरों से बात करने का, अगर बदतमीजी सुन रहा है तो वो बदतमीजी से बात करेगा। उसके लिए इट वोंट बी बदतमीजी, उसके लिए वो नॉर्मल होगा, बिकॉज वो वही सुन के और देख कर बड़ा हो रहा है। There is a thing, tabula rasa. Ma'am, am I pronouncing it correctly? Tabula rasa. Tabula rasa. Okay, this is where mentalists believed in innate ideas. Behaviorists believed that the human mind is a blank slate at birth, and all kinds of knowledge is learned from the environment. That's the same thing as I explained earlier. In this respect, they focus upon environmental change, conditioning, and societal effects on language acquisition. Just as I explained, language acquisition इसी तरह होती है कि हमें जो environment से conditioning मिलती है, मतलब conditioning could be whatever we teach. जैसे हम बच्चों को शुरू में मैंने जनरली अभी नोट किया कि हम अपने जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनसे प्यार में तोतला बोलते हैं, विषय ओ मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो इवेंचुअली वो भी उसी तरह उसको पिक करता है। हम उसको ये नहीं कहते कि बेटा पानी पियोगे, हम उसको शुरू से कहते हैं बेटा मम पियोगे, तो वो मम ही पानी को समझ लेता है और वो मम ही कहता है until he gets the idea कि नहीं ये मम नहीं, वाटर पानी है। Learned, not acquired. Core of behaviorism is the assumption that human and animal behaviors are determined by learning and reinforcement. If an action proves to have a positive outcome, the organism is more likely to continue to repeat this behavior. If the outcome is negative, the organism is less likely to repeat that behavior. For example, अगर एक बच्चा मुंह में हाथ डाल रहा है और हम उसको नहीं कुछ कह रहे हैं, या हम अगर उसको डांट रहे हैं, तो वो उसको समझ आ जाएगी कि नहीं ये नहीं करना, या हो सकता है उसको डांटने की भी समझना है। हम जब उसका मुंह से बार बार निकालेंगे उसका हाथ, तो उसको शायद तब भी ना समझ आए। लेकिन वंस वी डू इट हार्शली, हम उसको अगर पनिशमेंट के तौर पे उसको उसके हाथ पे मारेंगे या उसको मना करेंगे, उसका हाथ बांध देंगे, तो उसको समझ आएगी नहीं दिस इज नेगेटिव, तो ही वोंट रिपीट इट। एंड सिमिलरली पॉजिटिव, अगर बच्चा तमीज से गिराए बगैर खाना खा रहा हो फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको शाबाशी देंगे, उससे प्यार करेंगे, उसको समझ आ जाएगी हाँ जी ये अच्छा काम है, तो he would repeat it, but the negative thing won't be repeated again and again. These associations between stimuli, actions, and responses could explain virtually every aspect of human and animal behavior and interaction except one, language. ये सारा कुछ हर एस्पेक्ट में हो सकता है, उसके एक्शंस के लिए हो सकता है। हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसके बिहेवियर के लिए कर सकते हैं। वो किस तरह से बात करता है ये हम उसका लहजा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज हम नहीं कर सकते कि वो क्या सीख रहा है। verbal behavior by Skinner believed that a sentence is merely part of a behavior chain, each element of which provides a conditional stimulus for the production of the succeeding element. The probability of a verbal response was dependent upon four things: reinforcement, stimulus control, deprivation,
and aversive stimulation. Operant conditioning क्या होता है? Skinner believed that the best way to understand behavior is to look at the causes of an action and its consequences. He called this approach operant conditioning. Operant conditioning is a method of learning that employs rewards and punishments for a behavior. Operant conditioning की reinforcement जो है वो behavior को increase करती है, मतलब शाबाशी कह सकते हैं. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा हिस्सा होता है पनिशमेंट, जो किसी बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए की जाती है. ये भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. टाइप्स ऑफ ऑपरेंट्स. 3 types of responses or operants that can follow behavior are neutral operants, मतलब responses from the environment that neither increase nor decrease the probability of a behavior being repeated. ये neutral operants वो होते हैं जो कि ना तो किसी चीज को बढ़ावा देते हैं, ना ही उसको खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं. Enforces responses from the environment that increase the probability of a behavior being repeated. Reinforcers can be either positive or negative. That is saying कि अगर हमने किसी के behavior को कहना है कि जी हाँ जी ये repeat करता रहे, जिस मैंने जैसे अभी एग्जांपल दी खाने की, अगर बच्चा अच्छे तरीके से खा रहा है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसकी पसंदीदा चीजें देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो that is something to increase the behavior. Then punishes response from the environment that decrease the likelihood of a behavior being repeated. Punishment weakens behavior. ये decrease करने के लिए होता है. Now, operant conditioning essentials. The essentials of operant conditioning are stimulus and response, reinforcement, punishment, imitation. Stimulus and response. A stimulus is something that has an impact or an effect on an organism so that its behavior is modified in a detectable way. A response is a bodily process occurring due to the effect of some anteceding stimulus or agent. In operant conditioning, a subject given external stimulus gives response. Stimulus and response in language acquisition. In the process of language acquisition, the caregiver's speech is stimulus given to the child who babbles and coos at a response. When reinforcement occurs and the child is patted or caressed when he speaks, then he forms a language-producing habit. The act of reinforcement is vital to the conditioning and to prove its importance. Reinforcement and punishment. There's a small video that I have downloaded and shared. This would help clear the idea of reinforcement and punishment. साउंड मुझे नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? मैं शेयर करूं दोबारा, मतलब उसकी साउंड थी वीडियो की तो दोबारा शेयर कर. हाँ जी, साउंड है. अगर आवाज नहीं आ रही है तो आई कैन स्पीक विद इट. ठीक है, आवाज नहीं आ रही है. ओके, मैं फिर साथ साथ बोलती हूँ. वो ये बता रहे हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो 2 तरीकों से की जा सकती है. हम किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग. फॉर एग्जांपल, इफ अ डॉग पूप्स ऑन अ कारपेट, तो हम या तो उसको रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं कि वो ये दोबारा करे, या फिर हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं कि वो ये दोबारा ना करे. दिस इज व्हाट.
See, if a dog poops on a carpet, then either we give reinforcement, which could be negative or positive, कि वो दोबारा करे, या फिर हम उसे punishment दे सकते हैं negative और positive कि वो दोबारा ना करे. मैंने पॉज इट तो वो दोबारा आगे पीछे हो जाता है. नाउ हम जो रीइंफोर्समेंट देते, देयर कैन बी 4 पॉसिबिलिटीज, 2 रीइंफोर्समेंट की और 2 पनिशमेंट्स की. तो रीइंफोर्समेंट्स पॉजिटिव इस तरह हो सकती है कि हम उसे कुकी दे सकते हैं कि जिससे वो खुश हो जाए और वो ये दोबारा हरकत करे. एंड यहाँ पर हम उसे नेगेटिव दे सकते हैं. नेगेटिव यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ बुरा हो, यहाँ पर नेगेटिव इज रिमूविंग समथिंग. मतलब अगर रीइंफोर्समेंट रखनी है कि इट वुड इंक्रीज अ बिहेवियर, तो हम उसके लिए नेगेटिव ये रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं कि हम उसकी लीश जो है वो उतार सकते हैं, सो ही इज फ्री एंड ही अंडरस्टैंड्स कि हाँ ये एक रिवॉर्ड की तरह है. When the punishment is positive, yeah. When the punishment is positive, तो हम उसको डांट सकते हैं, स्कोल्ड कर सकते हैं कि he wouldn't do it again. और अगर वो नेगेटिव पनिशमेंट हो तो we can remove something pleasant. जैसे उसका कारपेट जो था, it was a pleasant thing for the dog, लेकिन हमने वो रिमूव कर दी, तो that indicates him कि जी ये गलत काम किया है, तो उसकी वो pleasantness जो है वो खत्म हो गई है. ये चीज स्किनर ने सबसे पहले मतलब की थी with a mouse through Skinner box. वो ये किया गया था कि उसने एक माउस को एक स्किनर बॉक्स के अंदर रखा with a lever which if a mouse presses तो वहां पे खाना आएगा. पहले माउस ने ये काम किया थ्रू मतलब अनजाने में, when he was moving around the box, the mouse, तो उसने वो लेवर प्रेस हुआ और वहां से खाना आया. तो he didn't understand quite then. उसके बाद दोबारा हुआ तो उसको फिर समझ आई कि माउस को कि हाँ अच्छा मैं ये लेवर दबाऊंगा तो खाना आएगा. तो वो फिर वो लिवर बार बार दबाता था so that he could get his food. And that box was known as Skinner box. There are ABCs of behaviorism. A is antecedent, B is behavior, and C is consequence. माउस ने पहले देखा कि खाना आ रहा है, किस तरह आ रहा है, फिर उसने बिहेवियर उसका अडेप्ट किया और उस लेवर को खुद प्रेस करना शुरू किया, और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट आया कि वो खाना बाहर आ रहा था. स्किनर ने बिहेवियरिज्म जब किया था, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स की थी बहुत ज्यादा, और जब ये समझ लिया था कि इट इज समथिंग दैट शेप्स योर माइंड, तो फिर ये बहुत जगहों पर इस्तेमाल हुआ था, फ्रॉम साइकाइट्रिस्ट्स टू द सोल्जर्स. मतलब आर्मी तक इस चीज को प्रैक्टिस करने लग गई थी थ्रू स्किनर्स फाइंडिंग्स. ओके, imitation. Behaviorist theories said that children acquire language through imitation. Skinner conducted research and concluded that language was another form of learned behavior. This brought him to the conclusion that children learn language through nurture rather than it being biologically programmed or their genetic inheritance, as other theorists say. Stimulus response theory. The behaviorist theory of stimulus response learning considers all learning to be the establishment of habits as a result of reinforcement and reward. According to this, babies obtain negative language habits via varied babblings which resemble the appropriate words repeated by a person near him. Since his babblings and mutterings are rewarded,
he goes on emitting sounds, groups of sounds, and he also grows up. As he grows up, he combines the sentences. Trial and error process. Through trial and error process, children develop a natural affinity to learn the language of their social surroundings, whose importance over language learning and teaching must never be underestimated. According to behaviorist theory, human and animal learning is the process of habit formation. ये सिर्फ humans में नहीं, animals में भी होता है. Can I take a pause, please? Animal learning is a process of habit formation. ये सिर्फ humans के लिए नहीं है, ये animals भी इसी तरह हैं. For example, when we train a dog, और सर्कस में जब हम monkeys को ये देखते हैं कि lions even though trained होते हैं, वो क्या होता है? वो behaviorist theory के through ही होता है, क्योंकि वो habit formation होती है. वो जिस तरह से देखते हैं, अगर एक पपी फॉर एग्जांपल पैदा ही इस तरह के एनवायरनमेंट में हुआ है कि वो देख रहा है कि उसके इर्द गिर्द जो पपीज है वो किस तरह से ट्रेंड है, वो कहाँ पे पूप करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कहाँ पे पानी पीते हैं, तो वो उसी तरह से ट्रेन हो जाते हैं. बट अगर आप एक अडल्ट पपी को लेकर आते हो जो 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने ऑलरेडी कहीं और गुजार के आया है, या फॉर एग्जांपल स्ट्रे डॉग, तो उसको ट्रेन करने में थोड़ा टाइम लगता है. Conclusion. Behaviorism is primarily concerned with observable behavior as opposed to internal events like thinking and emotion. Behaviorist theory believes that infants learn oral language from other human role models through a process involving imitation, rewards, and practice. Human role models in an infant's environment provide the stimuli and rewards. When talking about language, तो यही होता है कि infants जो हैं वो अगर for example कनाडा में पैदा हुए हैं, तो they would automatically acquire French and even English, जो यहाँ वहाँ पे ज्यादा बोली जाती हो. बट अगर एक पाकिस्तानी फैमिली वहाँ पर रह रही हो, तो वो उसके साथ साथ उर्दू भी सीख लेगा. कब? जब उसके घर में उर्दू बोली जा रही. और जो इन्फेंट्स होते हैं वो अपने आसपास देखते हैं कि वो क्या उनके बड़े किस तरह से उनसे बोल रहे हैं या आपस में बोल रहे हैं. दे एक्वायर दैट थिंग. फॉर एग्जांपल, आई टेक माय सन एज एन एग्जांपल. मैं उसको अगर बार बार अल्लाह प्रोनाउंस करती हूँ, he looks at my mouth, he looks at how I pronounce and how I position my tongue. I open my mouth और अल्लाह कहते हुए लाम के वक्त I go up, my tongue reaches my upper teeth. तो उस वक्त वो उसी तरह जब देखता है ना, तो अपना मुंह खोल के उसी तरह प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा होता है. हालांकि उसके मुंह से आवाज उस तरह नहीं निकल रही होती, लेकिन वो अपनी जबान को उस तरह पोजीशन करने की कोशिश कर रहा होता है देख देख के. सो आई थिंक दैट्स व्हाट behaviorist theory is actually. ठीक हो गया. थैंक यू अजीजा.